Hi everyone and welcome back to another section of chapter 12 जहाँ पे we'll start with the variables and we'll also work upon stored procedures. Okay, so we'll go back to the workbench and variable is actually used ना to store single value data. ठीक है, and हर टाइप का डेटा को ये सपोर्ट नहीं करता है. It can support only string, integer, decimal, float या फिर null values. ठीक है, अब हम वेरिएबल कैसे बनाएंगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं. So we can write set at the rate के साथ we'll specify the variable name. I'll write Ethan's var and we'll assign it a value. ठीक है, let's just say text. अब यहाँ पे हमें string नहीं define करना पड़ा, क्या जो data type है character नहीं define करना पड़ा. अगर यहाँ पे if I write 10.0 तो ये automatically उसे decimal में ले लेगा. अगर मैं सिर्फ 10 लिखता हूँ तो उसे ये integer में ले लेगा. अगर मैं null लिखता हूँ तो null में ले लेगा. ठीक है, so I'll write this as test. ठीक है, and I'll click on enter. तो यहाँ पे you can see we have created the variable Ethan's var. Fine. अब इसका यूज हम ऐसे नहीं करेंगे. इसका यूज either we can make it with the select query. जैसे I'll write select at the rate trainer rating from, या trainer rating के साथ इसे अब assign भी करना पड़ेगा. In the middle of the query अगर हम इसे assign कर रहे हैं तो equal to के पहले colon भी इसमें लगाएंगे. Let me just write trainer rating is equals to and I'll specify the name of the column rating from. अब कौन सा टेबल है? Ethan's DB के अंदर trainer credentials हैं. इसे रन करते हैं. Now we can see कि ये particular variable हमारे पास बन गया and इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज है. फाइन. अब इसमें आप where clause भी लगा सकते हो, joins भी लगा सकते हो. वो सारी चीजें जो हमने करी है सब इसके साथ कर सकते हो. So the customization and the degree of freedom जो आपके पास रहेगी for using the variable is limitless. Okay, बट अभी तो हमने यहाँ पे नॉर्मल जब सिलेक्शन ऑपरेशन करते हैं कॉलम नेम के साथ तो ऐसे भी हमारे पास कॉलम नेम्स आ जाते हैं. तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? हम वही काम दोबारा एक एक्स्ट्रा ओवरहेड वेरिएबल का लेके क्यों करें? सो वेरिएबल्स आर एक्चुअली यूज्ड टू स्टोर डेटा या फिर डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट जब हम प्रोसीजर का यूज करते हैं. एंड व्हाट इज अ प्रोसीजर? प्रोसीजर होता है इज अ कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल का स्टेटमेंट जो डेटाबेस में ऐसे रखा जाता है. बट जब अब आप देखोगे तो आप इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ट्रांजैक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, बट ट्रांजैक्शन में एक लॉजिकल फ्लो होता है. ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर में आपके पास इट इज नॉट नेसेसरी कि एक ही टेबल के अंदर हम एक फ्लुएंट मैनर में काम करें. एसेट प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी जो है प्रिजर्व होती हैं स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर, बट स्टोर्ड प्रोसीजर में हम डेटा को लेते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं, व्हिच इज मोर और लेस सिमिलर टू द ट्रांजैक्शन. बट ट्रांजैक्शन में हमारे पास एक फ्लो रहता है. ठीक है, एंड यहाँ पे प्रोसीजर में इट इज नॉट नेसेसरी कि जो है हमारे पास ट्रांजैक्शन में एक फ्लो मेंटेन है. ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर में एंड इवन इन द केसेस ऑफ कर्सर्स, तो जहाँ पे कर्सर्स में हमारे पास वैल्यू रिटर्न होके आती है तो वहां पे वी मेक यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स ऑन अ लार्जर स्केल. सो स्टोर प्रोसीजर में अब हम बनाते कैसे हैं उसमें? तो we'll first of all write just like we created a table and view, we'll write create procedure with the procedure name. Let's just write Ethan's procedure. Fine. And इसके साथ में we'll specify this function and we'll write begin. इसके stored procedure के अंदर the logic या the collection of SQL statements जो procedure के अंदर रहेंगे that will be enclosed within the begin block. अब begin block के बाद हम यहाँ लिख सकते हैं अपना statement. Let's just write select star from Ethan's DB dot credentials. अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रोसीजर बना रहा हूँ just so that आपको सिंटैक्स पता लग जाए, सिग्निफिकेंस पता लग जाए. Then we'll move on towards some complex procedures as well. Okay. And then जैसे ही हमारे पास SQL statements यहाँ पे होंगे, let's just write another query. Select star from Ethan's DB dot trainer article एंड यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया बिकॉज एक क्वेरी कंप्लीट हो गई है. अब इफ यू कैन सी कि वी हैव ऑलरेडी टर्मिनेटेड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड वी आर स्टार्टिंग विद अनदर स्टेटमेंट. तो अब इसके लिए हम सीक्वल को आइडेंटिफाई कैसे करवाएंगे कि हाँ भाई दिस पर्टिकुलर लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4 इंडिपेंडेंट क्वेरीज नहीं है, ये स्टोर्ड प्रोसीजर का ही पार्ट है. उसके लिए विल चेंज द डेलिमिटर. अब डेलिमिटर क्या होता है? डेलिमिटर इज द कीवर्ड जिसके बेसिस पे आप सीक्वल को बताते हो कि हाँ मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट इट. ठीक है, सो विल अपडेट दिस डेलिमिटर एंड अपडेट करने के लिए विल राइट द कीवर्ड डेलिमिटर. ओके, ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है. डेलिमिटर
एंड मैं डबल डॉलर साइन का यूज कर लूंगा। ठीक, I'll run this thing off। ओके, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है, delimiter has now changed। अभी यहाँ पे I'll clear this off। जो stored procedure आधा अधूरा लिखा हुआ था उसका एरर था। ठीक है, now the delimiter has changed and यहाँ पे I've specified, यहाँ पे you can see जो एरर पहले आ रहा था Ethan trainer credential के सेमीकोलन के बाद, now it is removed because हमारे पास अभी हमने procedure का end specify नहीं किया है। Fine, so we've written another select query। अभी के लिए I'll write only one query, but you can write multiple select queries। And उसके बाद once the stored procedure का logic is complete, I can write the end block और end के साथ I'll specify the updated delimiter। So this is how you create your stored procedure। ठीक है ठीक है, now what we can do is we can change our delimiter once again to the semicolon। I'll remove all of this and I'll change the delimiter। ठीक है, we'll also check whether the delimiter is changed successfully or not। So I'll write select star from ethansgb dot trainer credentials and इसको रन करते हैं। तो semicolon हमारे पास वापस termination statement में आ चुके हैं। So if we try and have a look, रिफ्रेश करते हैं, तो वी हैव दिस stored procedure। ठीक है, एंड इस stored procedure को अगर हमें रन कराना होगा ना, तो what we can do is I'll first of all clear everything from here and I'll close this particular output window। I'll make use of call keyword and I'll specify the parenthesis and इसको रन कर। अब जैसे ही हमने कॉल किया तो stored procedure के अंदर जो भी चीजें हमने लिखी हुई थी वो सारी चीजें एग्जीक्यूट हो गई और उसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई आउटपुट जेनरेट होना था तो आउटपुट विल बी जेनरेटेड। ठीक है, सो this is how you create and execute your procedure। अब अगर let's just say कि हमने procedure, अब procedure is now redundant और हमें उसे delete कर देना, so we can clearly and very easily use the drop keyword। drop के साथ I'll specify the stored procedure का name, Ethan procedure, and I'll click on this semicolon। Okay, so drop procedure name, साथ में यहाँ पे I'll specify the keyword procedure as well and इसको run कर देते हैं। So now you can see procedure हमारा delete हो चुका है and if we try and refresh this, अभी actually यहाँ पे it is not visible। So procedure हमारा delete हो चुका है and it is also reflected over here in the logs as well। Fine, so now I'll tell you, अभी तो हमने independently variables के बारे में जाना कि variable क्या होता है, procedure के बारे में जाना procedure क्या होता है। अब we'll combine the working of variable and procedure just so that you get an idea कि हम variables को कैसे use कर सकते हैं। Fine, so first of all let me just try change the delimiter once again and इस बार हम कुछ भी normally execute नहीं करेंगे कि एक बार delimiter change किया फिर procedure बनाया। We'll execute everything in one go this time। ठीक है, so now I'll write create procedure and okay, create procedure name, I'll make use of Ethan's proc। ठीक है and अब यहाँ पे if you want you can make use of in keyword। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा customization वाला requirement है then you can make use of in keyword। fine, and then उसके बाद we'll write the begin वाला portion and begin के अंदर we'll write the select। I'll write select rating equals to and we'll write rating @rating equals to rating from ethansgb dot credentials। ठीक है, where username is equal to admin। फाइन, अब admin के साथ में कोई यूजर रजिस्टर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, doesn't matter। ठीक, and then we'll end this particular procedure। इसके साथ में we'll put in this delimiter and we'll change the delimiter यहीं पे ही back to the semicolon। ठीक है, Control Shift and Enter। This is executing अभी। Okay, so procedure should be created। We'll refresh this, एक warning दिया है, but the stored procedure is created। ठीक है, because setting the user variable within the expression is depreciated now। ठीक है so we'll call this particular procedure। so I'll write call procedure। okay, call ethansgb dot ethans proc and इसके बाद semicolon देके I'll run this। so there you can see हमने यहाँ पे variables को stored procedure के अंदर we have incorporated it। ठीक है we'll drop this procedure here once again। drop what's the name, Ethan's proc, drop procedure Ethan's procedure। okay, ethansgb dot ethans proc। अब इसको रन करते हैं। okay, I think it is already dropped। क्या नहीं
So what we'll do is we'll check कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. It may be some छोटा सा syntax error and okay, यहाँ पे I've specified this इस वजह से प्रॉब्लम है. Okay, so what we'll do is कि we'll create one more procedure with the same name and this time what we'll do is कि we'll make use of some other delimiter. So इस बार delimiter को मैं slash कर देता हूँ, ठीक है, and then I'll write create delimiter slash. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार डबल डॉलर या डॉलर ही लगाना है, कोई भी कैरेक्टर को आप बना सकते हो, बट मेक श्योर कि स्पेशल कैरेक्टर्स को आप बनाओ, अल्फाबेट को आप मत बना लेना, ठीक है. दिस टाइम विल क्रिएट अ प्रोसीजर विद अ बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेरी एंड विल ट्राई एंड एग्जीक्यूट इट. सो विल राइट क्रिएट अ प्रोसीजर Ethan Sprock वंस अगेन. ओके, हाइफन वाज नॉट अलाउड एक्चुअली. अब इसके बाद में विल राइट बिगिन एंड विल राइट सेलेक्ट Ethan cb dot Ethan. Okay, Ethan stable credential dot username comma Ethan cb dot credential dot rating. ठीक है, then we'll also select, okay, we'll put in a comma Ethan cb dot, okay, trainer article dot the title of the article from Ethan cb dot trainer credentials and the second table was Ethan cb के अंदर का trainer article. अब साथ में will specify where का clause as well. Where में I'll write के Ethan's trainer credentials dot id should be equal to Ethan's the trainer article dot author id. I believe author id was the name of the field and इसके साथ में I'll put in the semicolon. Okay, इसको हटाते हैं यहाँ से. टाइटल की जगह लेट मी जस्ट चेक क्या है, ऑथर आईडी है, तो यहाँ से टाइटल सर्च करा लेते हैं. फाइन. सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स क्वेरी विच विल बी एग्जीक्यूटेड विद इन द स्टोर्ड प्रोसीजर. ठीक है, एंड विल नाउ सप्लाई द एंड ब्लॉक. एंड के साथ में विल पुट इन द अपडेटेड डेलिमिटर एंड विल चेंज द डेलिमिटर बैक टू सेमीकोलन. ठीक है, विल एग्जीक्यूट एवरीथिंग एंड यहाँ पे प्रोसीजर इज क्रिएटेड. राइट क्लिक करके यहाँ पे विल चेक वेदर द प्रोसीजर इज क्रिएटेड और नॉट. सो Ethan Sprock हमारे पास फिर से क्रिएट हो चुका है. विल कॉल दिस Ethan Sprock वंस अगेन, Ethan cb dot Ethan Sprock. इसको रन कराते हैं. नाउ यू कैन सी हमारे पास प्रोसीजर का आउटपुट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ. वी हैव कंप्लीटेड प्रीटी मच एवरीथिंग रिगार्डिंग द stored procedure and in the next section what we'll do is we'll discuss some of the options regarding the user defined functions. Okay, but यहाँ पे अब आप प्रोसीजर में since you have the familiarity, complex queries भी हमने परफॉर्म कर दी हैं. You can also perform inner joins, outer joins, left join, right join, all of those things यहाँ पे you can perform within the stored procedure और आपको कॉल करने का भी तरीका पता है. ठीक है, and once you call this ना, तो आप इसको you can also store it inside a view. ठीक है, या store it inside a table as well. For instance, if I want to create a table, what I'll write is create table. Let me just see. Test table को यहाँ पे मैं पहले drop कर देता हूँ. ठीक है, I'll remove everything. I'll drop Ethan cb. या what I'll do is I'll drop underscore table. Drop table. ठीक है, table is deleted. अब now what I'll do is I'll create this table once again. Create table. Test table from view should be renamed to, let's just say, test table from procedure. And साथ में I'll specify the call of this particular stored procedure. What was the name of the stored procedure? Ethan's underscore procedure. So once this query is executed now, you can easily create the stored procedure.